संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। दुनिया में एग्स का एक बेहतरीन फैन बेस है। एग्स की खास बात तो उनकी वैरायटी ऑफ डिशेस में है। हम जानते हैं कि हमारे एगिटेरियंस को हमेशा न्यू रेसिपीज की तलाश होती है। इस हफ्ते शेफ मैजिक की न्यू रेसिपी ऑफ द वीक में हम ला रहे हैं एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त रेसिपी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेफ ज्योति और आज मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी और अंडा करी। माय वंडरशेफ ऐप इज कनेक्टेड टू दिस शेफ मैजिक। लेट्स सी, गो टू द क्लाउड रेसिपीज, क्लिक न्यू रेसिपी टैब, and here's the recipe, simple anda curry. Here's the description and the ingredients. We'll go back and here's the anda bhurji. Here's the description and the ingredients. Start making anda bhurji. Now I have to attach multifunction blade and add onions and green chili. The onions are finely chopped and now I'll add oil and some jeera. Till the time onions are being sauteed for anda bhurji, let's start making anda curry. Now let's start making anda curry. For that, on the first step, we have to fry the eggs I have kept here. I'll click run. According to the next step, we have to attach the multifunction blade. I have already attached it and add the onions, ginger and garlic. After the onion, ginger, garlic is chopped, I'll add oil and jeera. Let the onions get sauteed for gravy till the time I'll finish it off with egg bhurji. After the onions are properly sauteed, I'll add tomatoes and the basic masala. Turmeric, Kashmiri red chili, garam masala and salt. The tomatoes are being cooked for anda bhurji. I'll start making the base gravy of anda curry. After the onions are done, I'll add tomatoes and the basic masala. Chili powder, coriander powder, turmeric, garam masala and salt. Anda curry base is getting ready. I'll start making anda bhurji. The base is ready for anda bhurji. I'll add eggs. Loosen the measuring cup. Eggs are being cooked for anda bhurji. I'll continue the process for anda curry. After the onion tomato masala is blended, we'll add water. For the curry, the gravy base is getting ready. So let's see anda bhurji. Smells incredible. Now I'll add coriander leaves and then serve it. The gravy smells amazing. We have to pour this hot gravy over the sauteed boiled eggs and serve it hot. दोनों ही डिश बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। इन दोनों रेसिपीज के अलावा हम आपके लिए लाए हैं और डिलीशियस एग रेसिपी। चेक ऑन योर वंडरशेफ ऐप और शेफ मैजिक।